नमस्कार दर्शक बंधुगण आज मुझे भिडियो कही आपने भी मागणार विद्युत पाइबा चाहते ताहले सरकार लागू कले आउ एक नुआ योजना। तो भिडियो को आपने स्किप न करी प्रथम रु शेष देखते आपने भी सबकि जापारे आपने केमी मागणार विद्युत पाइपर मुझे आपको डिटेल भिडियो सबकि कहीने चलतु डेरी नक भिडियो को स्टार्ट करने। तो देखिए पारे तो मुझे आपको देखे नौ गोटी गोटी कर ए टू जेड सबकि कहि आपंकर कौन कौन सब डॉक्यूमेंट लगे ताकि कहि कौन सब आपंकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही वीडियो को स्किप करेंगे ना शेष पर्यंत देखो आपने सबकि जानीपर। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना 300 यूनिट मागणा विद्युत जानतु आवेदन कर संपूर्ण प्रक्रिया। तो आपने देखते यही योजनार नाम होगा आपंकर प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना 300 यूनिट पर्यंत आपको मागणा विद्युत मिल जाए। तो आपंकर आवेदन क्राइटेरिया कौन रही है केमी आवेदन करेंगे सबकि यही भिडियो आपने जानीपर। चलतु तो देखिए आपने कौन रही अपडेट मुझे कही नौ आपण मागणार 300 यूनिट विद्युत पाइबा चाहते एवं मागणा विद्युत संजोग पाइबा चाहते कि जदि आपने भी 300 यूनिट पर्यंत मागणार विद्युत पाइबा चाहते तो आपने विद्युत संजोग मागणार करने चाहते कि तेणु यार लाभ पाइबा आपको पीएम सूर्यघर योजना पंजीकरण करने पड़ो। तो आपने केमी यार लाभ उठे पारे तो आपने गोटे कम कले आपने लाभ उठे पारे। तो आपने पीएम सूर्यघर योजना आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ो। तो आपने भी जदि करना आपको मुझे रिक्वेस्ट करुँचे जल्दी जल्दी पीएम सूर्यघर योजना आपने पंजीकरण करनी। ता सहित कौन रही मुझे कही नौ पीएम सूर्यघर योजना रजिस्ट्रेशन 2025 रे पंजीकरण करने आपको किसी डॉक्यूमेंट आवश्यक हो क्यों डॉक्यूमेंट आवश्यक हम ताहा यही वीडियो मुझे कहीनेबी। तो आपने जो पंजीकरण करने पीएम सूर्यघर योजना आपको किसी डॉक्यूमेंट लगे तो कौन कौन सब डॉक्यूमेंट लगे मुझे यही वीडियो लास्ट कहि। तो आपने वीडियो को स्किप न करी शेष देखूँ तो कौन रही है सबकि जानीपर। आसतु पीएम सूर्यघर योजना पंजीकरण 2025 सम्बन्धी समस्त सूचना विस्तृत भाव में जाना। तो आपंकर कौन रही समस्त सूचना विस्तृत भाव में यही वीडियो मुझे कहि वीडियो को आपने केवल देखूँ आपने स्किप करूँ ना। तो कौन रही देशर समस्त गरीब एवं आर्थिक दृष्टि दुर्बल परिवार पाई केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना आरंभ कर। तो कहाँपाई योजना आरंभ कर जो मैंने देशर समस्त गरीब परिवार ता सहित आर्थिक दृष्टि दुर्बल परिवार पाई केंद्र सरकार यही योजना लागू कर। योजनार नाम कौन प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना। ता सहित कौन रही मुझे कही नौ एवं पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन रखा जाइए। तो आपंकर जो पंजीकरण आपने केमी करेंगे ऑनलाइन ना ऑफलाइन बहुत लोक मान मनर सन्देह थी मुझे क्लीयर कर नौ पंजीकरण आपंकर ऑनलाइन करेंगे। ता सहित कौन रही मुझे कही नौ प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना पंजीकरण 2025 लाभ कौन रही। तो आपने जदि यह करुँच जो प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना आपने जदि आवेदन करूँ कौन कौन सब बेनिफिट देखापी मिल जाए मुझे ये वीडियो कहीनेबी। तो कौन रही प्रथम बेनिफिट होगा आपंकर देशर समस्त नागरिक एवं परिवार को यार सुविधा जोगाई समाज एवं अर्थनैतिक विकास निश्चित करने योजना लाभ करा। तो कौन पाई प्रथम होगा आपंकर देशर समस्त नागरिक एवं परिवार को यार सुविधा जोगाई सामाजिक एवं अर्थनैतिक विकास निश्चित करने यहाँ लाभ करा कहुच्छी। सहित कौन रही मुझे कही नौ प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना पंजीकरण 2025 अधीन योग्य परिवार मानक संपूर्ण मागणा विद्युत संजोग कहुच्छी। तो आपने केमी मागणार विद्युत पाइपर 300 यूनिट पर्यंत सी नहीं आपंकर प्रधानमंत्री नुआ योजना आरंभ कर। योजनार नाम होगा प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना। ता सहित आपंकर थार्ड लाभ होगा एवं से ही परिवार गुड़िक सौर छात स्थापित हम ता सहित से 300 यूनिट विद्युत मागणार दिज्व कहुच्छी। तो केते यूनिट पर्यंत मागणार दिज्व तो आपंकर जो से ही परिवार गुड़िक सौर छात स्थापित कर सौर छात स्थापित कर सहित आपको 300 यूनिट पर्यंत आपंकर विद्युत मागणार दिज्व कहुच्छी। सहित कौन कहगला मुझे कही नौ यही योजना अधीन देशर प्राय 1 कोटी परिवार को 300 यूनिट मागणा विद्युत जोगाई दिज्व। तो मुझे कही नौ जमी आपने तो जानते सुभद्रा योजनार हिताधिकारी आपंकर केते लक्ष लोक पाखापाखि 1 कोटी लोक सुभद्रा योजनार हिताधिकारी अच्छा से हीपरि आपंकर प्रधानमंत्री एठार आपंकर जो योजना आसी पीएम सूर्यघर योजना आपको केते कोटी लोक टंका पाइबे एठार 1 कोटी लोक 300 यूनिट पर्यंत विद्युत मागणार पाइपर कहुच्छी। ता सहित कौन रहा मुझे कही नौ देखते 1 कोटी परिवार को 300 यूनिट मागणार विद्युत जोगाई दिज्व कहुच्छी।
ଏହି ସ୍କିମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସରକାର ଏଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ କଟୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନ୍ କଟିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ରହିବ ସେଇ ନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ରହିଛି, ତ କେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କହିନେଉଛି। ଆବେଦନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାରତର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିନଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବି କେହି ବି ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିନଥିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଯଦି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି ଏଠାରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦେଉନଥିବେ, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି କେଉଁ ଦଲିଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନ ତଳେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଏଠାରେ କହିନେଉଛି। ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ତ କାହାର ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯାହା ନାଁରେ ବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। କ୍ଲିୟର ହେଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓବିସି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ଦରକାର ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବିଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷଷ୍ଠରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ରାସନ କାର୍ଡ଼। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସବୁକ୍, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସବୁକ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ତା ସହିତ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ 2025 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତା ନେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ତ ମୁଁ କହିନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା 2025 ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସାବଧାନ ସହିତ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣ ସହଜରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ କ୍ୱିକ୍ ଲିଙ୍କ୍ସ ଅଧୀନରେ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସୋଲାର ରୁଫଟପ୍ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଇ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କିମ୍ବା ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ତାପରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାଖଲ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିବ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦାଖଲ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଉପରେ ପାଇସାରିଲା ପରେ
बर्तमान आपन को सफलतार सहित पोर्टाल लॉगिन करने पड़ो। तो प्रथम आपने रजिस्ट्रेशन करने रजिस्ट्रेशन कर सारापर आपने लॉगिन पर क्लिक करके आपने लॉगिन हो सारापर प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना फॉर्म आप सामने खोल जहाँ को आप जत्नर सह पूरण करने पड़ो। तो तापर आपने लॉगिन हो सारापर आपंकर ये सूर्यघर योजनार गोटे फॉर्म सामने खोल से फॉर्म को आपने निर्भुल भाव में पूरण करेंगे। तापर आपने कौन करेंगे एवं एथिरे आवश्यक समस्त आवश्यक डॉक्यूमेंट स्कान करी अपलोड करने पड़ो। तो जहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट रही स्कान करेंगे तापर आपको अपलोड करने पड़ो। तापर आपको सबमिट ऑप्शन उपर क्लिक करने पड़ो। तो तापर आपने कौन करेंगे सबमिट ऑप्शन उपर क्लिक करने क्लिक कर सारापर आपने आवेदन रसीद पाइबापी जहाँ को प्रिंट करने पड़ो। तापर आपने सबमिट करने आपको एक रिसिप्ट मिल जाए जहाँ कि ये हूँ आपंकर आवेदन रिसिप्ट। तो क्लीयर है। तो आपने ये जो आवेदन रसीद आपने प्रिंट करके रखी नहीं थे कहीं जितेबाला भी आपंकर जितेबाला भी आपंकर जो प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना माने सर्वे हेब से आपको ये प्रिंट दरकार हेब। तो निहाती करके आपने प्रिंट को हजेबे ना आपने प्रिंट को मोबाइल कि आपंकर गूगल एटे आपंकर अपलोड करने डॉक रे तो आपने हजब ना। तो आपको मुझे रिक्वेस्ट करना आउ प्रिंट काढ़ी आपने बाक्स भितर जत्न रखिने जितेबाला भी सर्वे कर आपको घर आसिक ये प्रिंट को आपको मांगापी पड़ो। तो आपने प्रिंट को देखे सारापर आपंकर एठे 300 यूनिट पर्यंत मागणारे आपने विद्युत पाइपर। तो क्लीयर है। तो आपंकर जहाँ भी रिलेटेड नहीं कि आपंकर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकिन जब आपंकर किसी भी असुविधा अच्छी आपने कमेंट करेंगे। ता सहित जब आपको वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल आपने नुआ आसुले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। वीडियो मुझे ये एंड करना। जय जगन्नाथ।